Welcome to MCQs Academy with GP. Don't forget to like, comment and subscribe. अस्सलामुअलैकुम। ये पेपर है नम्स MDCAT का, जो कि 16 अक्टूबर 2022 संडे के दिन मुनक़िद हुआ। तो इसका जो पहला पोर्शन है फ़िज़िक्स का, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं और पहले 50 सवाल, इसका जो पहला पोर्शन है इसको कंप्लीट हल करते हैं। इसके बाद जो है दूसरे पोर्शंस भी तरतीब से हल किए जाएंगे। तो इसका जो पहला सवाल है वो है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है इफ़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ 1s then 1 second, then the period of 16m will be। तो इसका जो है हमारे पास 4 सेकंड, ऑप्शन डी। ये सवालात मैं हल नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं इनको हल करूं तो ये MDCAT के स्टूडेंट की तौहीन होगी, क्योंकि MDCAT के स्टूडेंट को ये सवालात ख़ुद हल करने चाहिए। मैं सिर्फ़ इनके जवाबात बता रहा हूँ। नंबर 3 है लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन ए। नंबर 4 द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 0.61 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी। नंबर 5 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी। Thermodynamics process during which the pressure is kept constant is called isobaric process. Option C. Energy stored in a capacitor is given by E is equal to CV. Option D. Electric field intensity is force per unit charge. Option C. It stores electrical potential energy. Capacitor stores the electrical potential energy. Option A. Question number 10 है the magnitude of the current in metals is proportional to the applied voltage as long as temperature of conductor is kept constant. It is the statement of Ohm's law. Option C. The resistance of pure metal increases with increase in temperature. Option A. The magnetic field inside the current carrying wire varies inversely with R. Varies inversely with R. The magnetic flux is maximum when angle between magnetic field and vector area is 0 degree centigrade. Option A. Lenz's law is based on the law of conservation of energy. Option B. In Fleming's right-hand rule, the thumb indicates force. Option A. Transformer works on the principle of mutual induction. Option C. A device that converts AC into DC is called diode. Option A. The conversion of alternating current into direct current is called rectification. Option B. क्वेश्चन नंबर 19 है 1 ग्रे यानी कि GY का मतलब है ग्रे इज़ इक्वल टू 1 जूल पर केजी। ऑप्शन बी 1 जूल पर केजी। A 32 G radioactive element decays and remains 2G यानी कि 2 ग्राम after 60 days. What is the half life of radioactive element? तो इसका हाफ लाइफ का फार्मूला आप लगाएं तो यहाँ पर 15 डेज आएगा। ऑप्शन डी। An elastic collision is the one in which kinetic energy and momentum is conserved. Option A. The time rate of change of velocity is called acceleration.
ऑप्शन बी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम को अगर आप ख़त्म कर दें, सिर्फ आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। In projectile motion, the range of projectile will be maximum at an angle of 45 degrees centigrade. Option B. Which of the following is not true? इन सब को अगर आप देखें तो इसमें ये जो है गलत लगता है, not true है, ये गलत है। An action and reaction have same nature. Action और reaction का same nature नहीं होता। ऑप्शन ए जो है ये गलत है। 25. Two buses moving at 100 km per hour and 80 km per hour respectively cross each other while moving in opposite direction. Velocity of one bus relative to the other bus is 20 km per hour, लेकिन इसको आपने खुद कन्फर्म करना है इसको सॉल्व करके। Which of the following pair of angles have same range for a projectile? सो ये जो है 45 एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड इनकी सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ऑप्शन सी। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल इज 76 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 28. The explosion of explosive material is application of law of conservation of momentum. Option C. 1 HP यानी horsepower is equal to 746 watts. Option C. The product of force and velocity is equal to power. Option C. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 mJ. Option B. The amount of work done in moving a body at certain point in a gravitational field to a position of zero potential such that the body is never accelerated is called gravitational potential energy. Option C. If the speed of a body is doubled, its kinetic energy becomes 4 mv square. Option D. An electric motor of power 2 HP is installed in an industrial unit. Its power is 1492 watt. Option D. 1 radian is equal to 57.3 degree. Option C. The minimum required velocity to put a satellite into the orbit is called critical velocity. Option C. Question number 37. A rotating wheel complete 12 revolutions in 4 seconds. Find the average angular velocity in radian per second. तो इसको हल आपने ख़ुद करना है, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। 18.8 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन डी। When an object experiences circular motion, the direction of centripetal acceleration is towards center. Option A. Crest of a wave acts as convex lens. Option B. The speed of sound in air does not depend upon pressure. Option B.